everyone. Welcome to all in the series of real analysis. आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी. सो डिफरेंशिएबिलिटी शुरू करते हैं. सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है एंड राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है वो लिख देते हैं सबसे पहले. Let f be a real valued function defined on an open interval I subset of R, then left hand derivative of f at x equals to c is denoted by L f dash c and defined by L f dash c equals to limit left hand limit of fx minus fc divided by x minus c, provided the right hand side limit exists. ठीक है. तो ये डेफिनेशन थी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की. तो किसी फंक्शन का एट पॉइंट सी पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एफ डैश सी ये होगा. ठीक है. एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए राइट हैंड साइड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए. दैट इज आर एच एल मस्ट एग्जिस्ट. ठीक है. देन लिखिए the right hand limit right hand derivative of f at x equals to c is denoted by r f dash c and defined by r f dash c equals to limit x tend to c positive, that means right hand limit of fx minus fc upon x minus c, provided RHL must exist. Right hand side limit exists. ठीक है. And the function f is said to be derivable at x equals to c if and only if left hand derivative
equals to right hand derivative and the common limit is called the derivative of f at x equals to c, and the common limit is called the derivative of f at x equals to c and denoted by f dash c. Therefore, f dash c equals to limit x tends to c fx minus fc upon x minus c. ठीक है. So अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी fx minus fc upon x minus c, then फंक्शन डेरिवेबल होगा, अदरवाइज नहीं. एंड इसकी जो लिमिट होगी उसको क्या कहेंगे, f dash c, यानी डेरिवेटिव ऑफ f at x equals to c. नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए. A function f defined on an interval a close interval a to b, defined on an interval is said to be derivable in the interval AB if f is derivable at all points of the interval AB, close interval AB. फाइन. तो एक एग्जांपल देख लेते हैं. Let f be a function defined on R fx equals to x square sine 1 upon x if x is not equal to 0 and 0 if x equals to 0. Then show that f is derivable for all x belongs to R and f dash is not continuous at x equals to 0. ठीक है. तो सॉल्व करते हैं इस एग्जांपल को. fx क्या गिवन है, x square sin 1 upon x if x is not equals to 0 and 0 if x equals to 0. ठीक है.
देखिए f1x यानी 1/x एंड f2x यानी sin x, ये दोनों फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। Therefore by chain rule the function f3x equals to composition function of f2 or f1x equals to sin 1/x is also differentiable, derivable whenever x is not equal to 0, ठीक है। And also जो फंक्शन f4x है यानी x स्क्वायर एंड f5x इक्वल्स टू साइन 1/x, x नॉट इक्वल टू 0 पर ये दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन हैं। Therefore the product function f4 f5 of x equals to x square sin 1/x is differentiable whenever x is not equal to 0। ये सब आप लोग 12th में पढ़ के आए हैं कि एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएबल है, साइन 1/x डिफरेंशिएबल है एट एक्स नॉट इक्वल टू 0 पर, ठीक है। ठीक है, सो यहाँ लिखते हैं ऑल्सो फॉर एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 बाय द रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन and the chain rule. We get f dash x equals to d by dx of x square sin 1/x. So by chain rule, sin 1/x and d by dx of x square plus x square and d by dx of sin 1/x. 2x sin 1/x plus x square cos 1/x minus 1/x square. x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा 2x sin 1/x minus cos 1/x when x is not equal to 0. So f dash x equals to 2x sin 1/x minus cos 1/x x whenever x is not equal to 0, ठीक है।
So now when x is equals to 0, we have LF dash 0 equals to limit x tends to 0 negative. That means LHL of fx minus f0 upon x minus 0. ठीक है. एंड अभी पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं. इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h माइनस f0 पर फंक्शन क्या था? 0. हमारा फंक्शन क्या था? लिख लेते हैं यहाँ पे साइड में. sin 1 upon x when x is not equal to 0 and when x equal to 0 fx equal to 0 upon x minus 0 minus h minus 0. ठीक है. So equals to limit h tends to 0 f minus h upon minus h equals to limit h tends to 0 f माइनस h पर वैल्यू क्या होगी? माइनस h होल स्क्वायर साइन माइनस 1 अपॉन h अपॉन माइनस h. ठीक है. अब देखिए एक h से एक h कैंसिल हो जाएगा. देन क्या बचेगा? माइनस h एंड साइन माइनस x. माइनस साइन x होता है तो माइनस बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा एंड साइन 1 अपॉन h equals to limit h tends to 0 sin 1 upon h upon 1 upon h. इसकी वैल्यू क्या होती है? 0. ठीक है. अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं इसका. सॉरी, h से एक h कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 1 upon h upon 1 upon h which is equals to 0. ठीक है. Now since left hand derivative at 0 equals to right hand derivative, therefore f is differentiable at x equals to 0 and f dash 0 equals to 0. ठीक है. अब हम चेक करेंगे कि f डैश कॉन्टिन्यूअस है 0 पर या नहीं है. तो देखते हैं. f डैश 0 पर तो 0 है, बट f डैश x क्या था? when x is not equal to 0 x sin 1 upon x 2x sin 1 upon x minus cos 1 upon x. तो इसकी हम लिमिट चेक करते हैं. अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी एंड वो इक्वल टू 0 हो जाएगी देन ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा. दैट मीन्स f डैश कॉन्टिन्यूअस होगा, अदरवाइज नहीं होगा. So limit x tends to 0 f dash x equals to
limit x साइड 1/x, ये तो 0 होगी इसकी लिमिट व्हेन x टेंड टू 0, बट व्हेन x टेंड टू 0 लिमिट cos 1/x goes to cos infinitive which does not exist. So limit of f dash x at x equals to 0 does not exist. So therefore f dash is not continuous at x equals to 0. ठीक है, अब एक थ्योरम लिखते हैं. Let f be defined and derivable on an interval then the range of f dash is an interval. ठीक है, let interval I be the domain of f ऐसे लिख लेते हैं. Let f is a function from I to R, here I is an interval. ठीक है, and let y be the range of f dash. ठीक है, and let pq belongs to y where p is not equals to q. ठीक है, so pq y से belong कर रहा है and y क्या है, range है. So there exist two distinct point belongs to I such that f dash a equals to p and f dash b equals to q. फंक्शन हमने f डैश कंसिडर किया. ठीक है, कोई फंक्शन है f, उसका डोमेन i है, देन f डैश का भी डोमेन i ही होगा. ठीक है, सो f डैश b इक्वल्स टू q वेयर a इज स्मॉलर देन p. अब देखिए, सिंस ab बिलोंग्स टू i एंड i इज एन इंटरवल, therefore AB is subset, close interval AB is subset of I. क्योंकि इंटरवल क्या होता है, कोई भी पॉइंट अगर हम कोई एक इंटरवल है A to B, अगर कोई भी पॉइंट लेंगे C D जो इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा होगा, देन इन C और D के बीच का हर एक पॉइंट इस इंटरवल से बिलोंग करेगा. दैट मीन्स क्लोज इंटरवल CD इज सबसेट ऑफ क्लोज इंटरवल AB. ठीक है, where C is smaller than D. तो यही चीज हमने यहाँ पे की. ठीक है, so close interval AB is subset of I. Hence f is defined and differentiable
on closed interval AB. So now let K be any real number between P and Q. K be such that K is greater than P and smaller than Q. ठीक है. Then there exists a real number C between A and B belongs to open interval AB such that f dash C equals to K. ठीक है. That is K belongs to Y. So thus if P and Q are in Y, then every number between P and Q, every number B such that B is greater than P, smaller than Q is in Y. ठीक है. Therefore Y is an interval. ठीक है. इंटरवल की डेफिनेशन यही तो होती है कि अगर कोई A है, B है, वो I से बिलोंग कर रहा है, A B कुछ भी हो, कोई भी पॉइंट हो इंटरवल के, एंड A इज स्मॉलर देन B, देन A B के बीच का हर एक पॉइंट फॉर एनी C ग्रेटर देन A स्मॉलर देन B अगर बिलोंग करेगा I में, देन I इज एन इंटरवल. ठीक है. नेक्स्ट एक थ्योरम लिखिए. Let f be defined on an interval I if f be derivable at a point x naught belongs to I, then it is continuous at x naught. ठीक है. प्रूफ लिखिए इसका. Since f is derivable at x naught, therefore f dash 0 is equals to limit x tends to x naught fx minus fx naught upon x minus x naught. Now if x is not equals to x naught, then fx minus fx naught equals to fx minus fx naught. मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं x माइनस एक्स नॉट से, x माइनस एक्स नॉट. ठीक है. एंड लिमिट लगा देते हैं x नॉट. देन ये किसके इक्वल हो जाएगा? लिमिट fx minus fx naught divided by x minus x naught, limit x tends to x naught x minus x naught. ठीक है. इक्वल्स टू f dash x naught मल्टीप्लाई, जब यहाँ लिमिट लगाएंगे तो ये x naught माइनस x naught हो जाएगा जो कि 0 होगा. ठीक है. इक्वल्स टू 0. Therefore limit x tends to x naught fx equals to limit
x tends to x naught fx naught, which is constant and is equal to fx naught. Hence, f is continuous at x naught. At x naught. Fine. Next theorem लिखिए. If a function is derivable at a point x naught, then for each number c, c belongs to R, the function cf is also derivable at x naught, and cf dash of x naught equals to cf dash of x naught. ठीक है, तो इसको भी प्रूव कर लेते हैं. Since f is derivable at x naught, therefore f dash x naught equals to limit x tends to x naught fx minus fx naught upon x minus x naught, and now cf dash of x naught equals to limit x tends to x naught cf of x minus cf of x naught upon x minus x naught equals to, अब देखिए ये किसके इक्वल हो जाएगा, c f x माइनस c f x naught, ठीक है, अपॉन x माइनस x naught. तो c को c एक कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं. लिमिट x टेंड्स टू x naught fx minus fx naught upon x minus x naught equals to c f dash x naught. Therefore, c f dash equals to c f dash of x naught, sorry. ठीक है. नेक्स्ट थ्योरम लिखिए. Let f and g be defined on an interval I, and if f and g are derivable at x naught belongs to I, then so also f plus g is, and f plus g dash of x naught equals to f dash x naught plus g dash of x naught. ठीक है. So now, since f and g are derivable at x naught, therefore f dash x naught equals to limit
x naught, x tends to x naught, fx minus fx naught upon x minus x naught, and g dash x naught equals to limit x tends to x naught, gx minus gx naught upon x minus x naught. Now f plus g dash x naught equals to limit x tends to x naught, f plus g of x minus f plus g of x naught upon x minus x naught. ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, देखिए ये किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट x tends to x naught, f plus g f of x plus g of x minus f of x naught minus g of x naught. देखिए एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट को एक साइड ले लेते हैं एंड जी एक्स माइनस जी एक्स नॉट को एक साइड, एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है, इक्वल्स टू लिमिट एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस लिमिट x tends to x naught, gx minus gx naught upon x minus x naught. ठीक है, ये किसके इक्वल है, f dash x naught plus g dash x naught, ठीक है, क्योंकि f और g डिफरेंशिएबल हैं एट x naught पर, सो f plus g भी डिफरेंशिएबल हो गया एट x naught पर, ठीक है। कुछ और रिजल्ट्स लिख लेते हैं। Let f and g be defined on an interval I, and if f and g are differentiable at x naught and x naught belongs to I. Then first लिखिए f g is also differentiable and f g dash x naught equals to f dash x naught multiplied by g dash x naught. Second देखिए, let f x naught is not equal to 0, then 1 upon f is differentiable at x naught and 1 upon f x naught equals to minus f dash x naught upon f x naught whole square. And third लिखिए, if g x naught is not equals to 0, then f upon g
is also differentiable at x0 and f by g dash equals to g of x0 f dash x0 minus f of x0 g dash x0. ठीक है, डेफिनेशन लिखिए मैक्सिमा एंड मिनिमम. So let f be a function defined on an interval I and C be any point of I, then the function f is said to have maxima at point x equals to C if there exists a positive number delta such that fc is greater than fx for all x minus c का जो मॉडुलस है smaller than delta, and fc is the maximum value of f. ठीक है, and the function f is said to have minimum value at x equals to C if there exists a positive number delta such that fx is greater than fc for all x such that modulus of x minus c is smaller than delta, and fc is the minimum value of f. ठीक है, थर्ड लिखिए the function f is said to have an extreme value at x equals to C if it has either a maximum or a minimum value at C.
फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स है माइनस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 10 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, सो देखिए कोई भी रियल नंबर है ए, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसका स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, सो x माइनस वन होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड अगर हम दोनों साइड नेगेटिव लगा दे देन माइनस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इज स्मॉलर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 10 is smaller than equal to 0 plus 10. So minus x minus 1 whole square plus 10 is smaller than equal to 10 for all x belongs to R. Hence fx is smaller than equal to 10 for all x belongs to R. Thus 10 is maximum value of fx. अब ये तो ट्रू है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, सो ये ट्रू होगा फॉर ऑल एक्स माइनस सी, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स माइनस सी इज स्मॉलर देन डेल्टा। ठीक है, सो एक डिफरेंस है जो मैंने अभी आपको डेफिनेशन दिखाई, वो है लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम की। वहां पे लोकल लिख लीजिएगा, लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। मतलब क्या है कि लोकल मैक्सिमम एट पॉइंट एक्स, दैट मीन्स उसके नेबरहुड में कोई एक मिनिमम पॉइंट या मैक्सिमम पॉइंट एग्जिस्ट करता होगा, सो उसको हम कहेंगे लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम। ठीक है, और जब हम पूरे डोमेन पर चेक करेंगे सो वो पॉइंट क्या होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम। सो डेफिनेशन लिख लीजिए, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। समझ तो आ गया कि क्या होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, let A is a subset of R and f is a function from A to R, then we say f has an absolute maximum on A if there exists a point x naught belongs to A such that fx naught is greater than equal to fx for all x belongs to A। ठीक है, सो क्या डिफरेंस है लोकल मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम में? लोकल मैक्सिमम में हम लिखते थे फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स माइनस सी इज स्मॉलर देन डेल्टा, मतलब एक्स के नेबरहुड में कोई एक मैक्सिमम पॉइंट बिलोंग कर रहा हो, और यहाँ पे हम पूरे ए पे चेक कर रहे हैं, पूरी डोमेन पर चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम डेफिनेशन लिखेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम की। let A is a subset of R and f is a function from A to R, then we say f has an absolute minimum on A if there exists x naught belongs to A such that fx naught is smaller than equal to fx for all x belongs to A। ठीक है,
और जो x नॉट है लिख लीजिए, नोटेशन चेंज कर देते हैं, x नॉट को यहाँ पर लिखते हैं x1, ठीक है, और मिनिमम में x नॉट रहने देते हैं। तो x1 v से x1 v से x1 is an absolute maximum point, and x naught is an absolute minimum point, ठीक है। सो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ थ्योरम्स करेंगे, कुछ मैक्सिमम एंड मिनिमम के लिए थ्योरम करेंगे, एंड कुछ कॉन्टिन्यूटी की कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम रह गई हैं वो करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू।